issues. So I'm comfortable with that thing. It should be good. I suppose it should be cleared. Can you check the live streaming on YouTube from your end? No, no, I would not like to check okay. that because that Let me ask that someone would else. confuse me. पंकज, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बंद कर दीजिए इसे। बेटे आप लोगों की क्या क्या क्लास है? सर BA 1, BA सेकेंड ईयर और MA प्रीवियस। हाँ जी सुरुचि मैम, वी आर लाइव ऑन YouTube राइट नाउ। ओके सर। सर मैं अपना मोबाइल इसमें अटैच करूं। आपका वीडियो ऑफ है सुरुचि मैम। मैं अभी कर रही हूँ सर ऑन। ठीक है सर। हाँ जी ऑन है। हाँ जी देखिए, आई थिंक जो बैठेंगे वो आराम से नजर आ जाएंगे। बच्चे पीछे पीछे ना जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो थोड़ा आगे आ जाओ बेटे। आगे आ जाओ। आप लोग तो आगे बैठना भी काम करें। दुकान तो है ना ये। प्रोजेक्ट हो रहे हैं YouTube के ऊपर भी, Facebook पर भी और Zoom मीटिंग पर भी, ठीक है? तो वहाँ पे बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या बच्चा क्या कर रहा था, और अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि पूरे इंडिया में जो है वो ये स्ट्रीम हो रहा है, राइट? तो थोड़ा सा जो है वो हम अच्छे से जो है RPSC को अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? और कोशिश कीजिएगा कि अगर माल है तो माल जो है वो लास्ट में फॉर्म में, अदरवाइज जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। जी आप एक बार ये वाले का नंबर है तो मेरे को
करेंगे तो फिर आपने जलने दो, आप रहेंगे, ठीक है। बच्चों के ऊपर कर देते हैं। सुरुचि मैम एक बारी फेसबुक पर चेक करना क्या हम लाइव हैं। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स को। हाँ जी क्या बच्चे बोलेंगे क्या? हम लोग वैसे सिर्फ लाइव चले हाँ जी सर, हो रहा है लाइव स्ट्रीम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। लेकिन बच्चे जब हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो आप लोग अपने अपने फोन जो है वो म्यूट कर लेना, अदरवाइज आवाज, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक यहाँ की थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स हो जाती है उसके बाद में वो आप ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज इसमें यूट्यूब जाएगा अभी। ठीक है कहीं कहीं आप लोग वहाँ पर नजर आएंगे। आ जाओ, कर लो। मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ, यूट्यूब करना, यूट्यूब कर लो, मैं कर देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। एक सेकंड मैं करता हूँ। हाँ जी मैडम ना, सुना है? हेलो 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 यस मैम। हेलो जी सुरुचि मैम, ये जो प्रोजेक्टर बलवान,
बलवान एक काम करो, इसको YouTube को ना फुल स्क्रीन कर दो, YouTube फुल स्क्रीन करा दो, YouTube फुल स्क्रीन कर दो लैपटॉप से। हाँ अभी तो फिलहाल नजर नहीं आएगा ना। आगे हो गया जी, आगे और YouTube की साउंड म्यूट कर दो अपनी। हो गई सर। ठीक है जी। हेलो। नहीं हाँ जी, वो बुला ले मैं किसी दौर में पकड़। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठ जाएंगे जी। थोड़ी सी सरकाना लाइट से डाल ऐसे पीछे का थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा। वैसे तुमको यूट्यूब पे कोई इनॉग्रल सेशन बंद हो जाएगा। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बीच बीच में ये कट रहा है। कौन सा आपने कौन सा दिया? अपना तो बंद है यहाँ का PG2 कर रखा मैं। हाँ जी सुरुचि मैम, आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी। आप जब बोलेंगे तो अनम्यूट कर लेना अपने आप को। सर कुछ बोल रहे हैं। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। हाँ जी सर। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अनम्यूट कर लेना जब चालू करोगे अपना। ठीक है सर।
तुम्हारा देख इसका। हेलो बेटे बोलेगा नहीं कोई भी, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। All the students are requested to keep themselves mute during the entire session. अब आप लोग ड्यूरिंग इंटरेक्टिव सेशन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अंजू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रोमिला म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी जयवीर जी आ गए क्या प्रिंसिपल सर? नहीं सर, अभी अभी नहीं आए, अभी आए नहीं, अभी 5 मिनट में आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर पंकज इज विद अस ऑलरेडी।
नहीं नहीं जयवीर, जयवीर जी, जयवीर जी, जी सर, आगे आगे प्रिंसिपल साहब हैं हम हमारे साथ। ठीक है जी। एक बार आप YouTube पर और Facebook पर साउंड क्वालिटी चेक कर लीजिए। विकास जी, साउंड डबल हो रही है, एक बार बोल लें। YouTube पर यहाँ डबल हो रही है, यहाँ ठीक है। YouTube पर सही है। YouTube पे आपने ज्वाइन कर लिया क्या? सबको बोलना, बोलेंगे। सर एक बार बोलना, आपकी आवाज डबल हो रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आपकी आवाज इको हो रही है, एक बार बोलना। हेलो, एक बार बोलना। एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? आवाज अब देखना। विकास सर, एक मिनट दोबारा से बोलिएगा। यस सर। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, सुरुचि मैम। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी, वो टाइम तो लग रहा है। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। YouTube पर ऑफ कराइए मैडम, YouTube पर ऑफ कराइए। आप इसकी माइक ऑफ कर दो, इसको निकल गया। एक बार ट्राई। हाँ, A अब ठीक very है। good morning to all of you. Esteemed Principal Dr. S.K. Goen, honorable guest and today's distinguished speaker, an erudite and an academician, Dr. Pankaj Sharma, Professor of English, CDLU, Sirsa, Head Department of English, Dr. Rajveer Parashar, honorable guest and today's distinguished speaker, an erudite and an academician, Dr. Pankaj Sharma, Professor of English.
आप म्यूट हो गए हैं सुरुचि मैडम। हेलो, हाँ जी भाई जी। नहीं मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो चुप हूँ। एक बार ये हाँ, इसको ऑफ ही कर दो यहाँ से, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दो। यहाँ से केवल जूम चलने दो। हाँ दो चीज हाँ दो सोर्स केवल जूम चलने दो इसको। हाँ जी। A very good morning to all, esteemed Principal Dr. S.K. Goyal, honorable guest, and today's distinguished speaker and erudite, Dr. Pankaj Sharma, Professor of English, CDLU, Sirsa, and academician and head Department of English, Dr. Rajveer Parashar, somber and austere Dr. Geeta Goyal, the chairperson of the inaugural day proceedings, my ever supportive colleagues, a unique mix of intellectuals and students who have joined us nationwide through various platforms, Zoom, YouTube, and Facebook. On behalf of RKST PG College, English Literary Society, and Department of English, I heartily welcome you all to this virtual Nandinam, that is 8 days workshop-cum-lecture series on Raja Rao's Kanthapura. Words are rose petals that are sprinkled with fragrance to invite one and all with warm greetings. Greetings and best wishes to all of you on the occasion of Lori, Makar Sankranti, and Pongal. May these festivals strengthen the bond of love, affection, harmony, and increase prosperity and love in all of your lives. Friends, I would not merely say that words, rather are heartfelt feelings filled with emotion, add flavor to heartily welcome you all in this workshop. With a vibrant academic environment and unfailing support of our worthy President, Sir, esteemed Principal, Sir, and management, we at RKSD focus on student-centric classroom and beyond classroom activities and events. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. I'm sure together we will make this event not just wonderful, but also full of learning and new experiences. English Literary Society fosters critical thinking by motivating students to edify their disposition in pursuit of providing academic and scholastic ambience, integrating modern and contemporary concepts, skill, and technology to conduct various classroom level, college level, state level, and national level events and activities. It is actually the active support, participation, trust, cooperation, and overwhelming response of you all who join us in all events and activities, encouraging us to organize such events like this Nandinam workshop cum lecture series. This activity was initially planned as a classroom activity, but the love and affection that we always receive and had been receiving not only from the colleges of Haryana, rather from every nook and cranny of the nation, propelled us to give it the shape of a national level online workshop cum lecture series. I thank you all for entrusting us with your inordinate response in every activity that we undertake. Now, before we move on, I would like to request the man of distinct vision, the guiding force, head Department of English, Dr. Rajveer Parashar, to please formally welcome Principal Sir, our distinguished speaker, Dr. Pankaj Sharma, and all our guest faculties and students. Respected Principal Dr. S.K. Goyal,
resource person of this national level workshop, Professor Pankaj Sharma ji, my dear colleagues organizing this great event, Dr. Vikas Bhardwaj, Dr. Suruchi Sharma, Professor Naresh Garg, Professor Jaibir Dhariwal, Dr. S.P. Verma, Dr. Manjula Goyal, Dr. Seema Gupta, Professor Anjali, Professor Richa Langyan, Professor Pranjal, Archana Tiwari, Nidhi Goyal, and above all, chairperson of this session, inaugural day of this 8 days long workshop, Dr. Geeta Goyal, who is presiding over the proceedings. I welcome all of you to this workshop, and I just want to share with all the participants, dear colleagues participating from all over the nation, that our institution, RKSD PG College, Cathal, and specifically our Department of English, is blessed with the guidance and motivation of Dr. S.K. Goyal, our worthy chair, who is constantly guiding us, motivating us, and encouraging all the faculty members of this great institution to involve students in activities, events, right from classroom to national level, international level, in creative endeavors. That is his central effort, and Department of English, whatever we are able to do, conduct, you have witnessed a number of activities during the lockdown. That was a tough period, and we got so much of your cooperation from all over the country. We organized half a dozen events, orientation programs, extension lectures, and motivated by, inspired by your cooperation, we thought of involving you, inviting you to a distinct kind of exercise, to something which is experimental. And this workshop on Kanthapura, a very specific text. The purpose is to engage ourselves for more than a week, so that our reading of this novel, it is viewed through the perspective of Professor Pankaj Sharma, and then we proceed to look at the same text from our own point of view, because that is exactly what is happening in literary world. We are passing through a phase where reader oriented theories, reader oriented, the individual sectional perspective of specific categories of readers, it has become all the more important. So from the key central thread that Professor Pankaj Sharma will provide, from that we want to achieve a kind of individual oriented capability of interpreting the text. That is our objective. So I welcome you all. I welcome worthy principal. I heartily welcome Professor Pankaj Sharma, who is an eminent scholar, whose interest and expertise in Indian studies in English is remarkable. We will benefit from that.
And I also welcome worthy chair of this session, Dr. Geeta Goyal. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to request the navigator of flagship, a seasoned scholar, our principal sir, Dr. S.K. Goyal, to say a few words and kick off the event. Thank you, Dr. Suruchi. Honorable Dr. Pankaj Sharma, Professor of English, CDLU Sirsa, and our guest speaker, for 3-day workshop on novel and culture, head department of English, the chairperson of first day of the 3-day workshop, Dr. Geeta Goyal, Dr. Suruchi Sharma, Dr. Vikas Bharadwaj, and my worthy colleagues in organizing committee as well as Department of English, and the participants from across the country and abroad, and dear students. It's my proud privilege to welcome you all this auspicious morning of Lohri and Makar Sankranti festival. And I particularly welcome Professor Pankaj Sharma, who has very kindly consented to deliver a series of lectures on one of the noted and well-read novel, that is Kanthapura. Professor Sharma, who is known for his scholarship, is a scholar on this particular novel also. And as Dr. Suruchi has mentioned, it's important that we come together and we work together. And with this in mind, probably the Department of English has organized this very event. It is the academic give and take, the give and take of knowledge, the give and take of ideas that is beneficial for all of us, the students, the teachers, and everyone who is associated with this world of literature. I am sure deliberations, all the participants whose number exceeds 1,000 will be benefited in appreciating the literature and in appreciating the novel and in knowing more about different aspects of Kanthapura. Dear participants, before I take leave from you, it's my duty to share with you something about this college, which is serving the country since 1954, when it was established by Rashtriya Vidya Samiti, a society initiated by Seth Makhanlal. Today, we have 5,000 and we teach them in 2 sessions, morning session as well as evening sessions, in 18 subjects and 4 faculties, that is arts, science, commerce, and management. This college
is prominent in Haryana, not only in academics, sports, and cultural activities, but also in social responsibility that we share with society. So once again, welcoming you all, I wish to thank the Department of English and congratulate them too for organizing this event. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your celestial motivational words always encourage us to compete with our own selves and organize student-centric activities, not only for the RKSDians, but also the students at large. Moving on, I request my proficient, tech-savvy, diligent colleague, Dr. Vikas Bhardwaj, to please formally convey the housekeeping guidelines of the seminar and formally introduce the theme and resource person, Dr. Pankaj, to all of us. Over to you, Vikas, sir. Am I audible? Sir, repeat. Loud and clear. Go ahead. Okay. Very good morning to you all. Honorable Professor Pankaj Sharma, respected Dr. S.K. Goel, the principal of the college, Dr. Rajbir Parashar, the head, Department of English, RKST College, Dr. Geeta Goel, who will chair the session. Just a minute, there is some disturbance. Let me mute. Yes, it's fine now. Dr. Geeta Goel, who is going to chair this session. Organizing team members, Dr. Suruchi Sharma, organizing team members, Dr. Suruchi Sharma, Mr. Naresh Garg, Dr. S.P. Verma, colleagues and friends, my dear budding scholars, researchers, PG and UG students who are online from every nook and cranny of India. I warmly welcome everyone here to the inaugural session of the three-session workshop on Raja Rav's Kanthapura. Being organized by the English Literary Society of our college. My name is Vikas Bhardwaj. I teach at the host institution, that is RKST PG College, Kaithal, and I deem it my proud privilege and with pleasure, I am having this opportunity to introduce to you our resource person, Professor Pankaj Sharma, and I will also be introducing the theme of this workshop. Dr. Pankaj Sharma has a teaching experience of more than 24 years, a university gold medalist of MA English of MDU Rohtak. Professor Sharma started his teaching career from Hindu College, Sonipat in December 1996, and then he joined the Department of English, CDLU, Sirsa, Chaudhry Devilal University, Sirsa in 2007. He became a professor of English in 2013. He has published many papers in prestigious, refereed, indexed journals. He has read papers in around 60 seminars, conferences, webinars, and has chaired and participated in around 40 of these as a resource person or a keynote speaker. He has also held a number of academic and administrative positions. He participated in a 6-week seminar in translation studies at Society of Humanities at Cornell University, United States of America, New York,
An online short-term course on Introduction to Digital Humanities from Harvard University is another feather recently added to his cap. Since March 2020, Dr. Sharma has been working on digital interventions in study and teaching of English language and literature, and he has delivered around 10 sessions on various aspects of digital learning. Apart from these, Dr. Sharma is an ardent lover of animals, and his unconditional love and bond for stray dogs is unmatchable. During his illustrious teaching career, he has co-edited 3 textbooks of UG classes, all published by Macmillan India Limited. And the most important thing is that he is the co-editor of the prescribed textbook, Reading a Novel, Kanthapura, which we all have been teaching to the students of BA third year, 5th semester for last some years. Needless to say that this book is meticulously edited. The scholarly and lucid commentary by Dr. Sharma in the portion related to Kanthapura makes the textbook par excellence. Dr. Sharma has really worked hard on it, and the textbook is self-sufficient for the students, even for examination purposes. Students don't even need to buy any cheap notes or guides, etc., to get through their exams. Hence, for this workshop on Kanthapura, meant specifically for BA third year, 5th semester students, and for every literary enthusiast in general, we couldn't have found a better resource person other than Professor Sharma. In modern times, with the appearance of Indian writing in English towards the close of the 19th century, the novel came onto the scene rather late in India. It was the British who introduced the Indians to the novel as a form of literature. The Indian novel in English emerged in the 1920s and established itself uh, as a popular form in the next 30 years. Raja Rao was among the most significant Indian novelists writing in English during the middle decades of the 20th century. Well before India's independence from Britain in 1947, Raja Rao, along with writers like R.K. Narayan and Muluk Rajanand, commandeered the language of the colonizer to represent the experiences of the colonized. Raja Rao had a philosophical bent of mind, and he was a nationalist too. But to show his patriotism, Rao chose novel as the medium of expression because he found the novel as an effective medium to influence a nation. One of the greatest writers of the 20th century, D.H. Lawrence, believed that the novel was one form of human expression large enough to articulate and dramatize the dynamic process of living. In his essay, Why the Novel Matters, Lawrence celebrates the novelist's advantage over the saint, the scientist, the poet, and the philosopher, all of whom deal only with parts of composite being of humankind. The novelist alone, says Lawrence, is capable of rendering the whole of, I quote, man alive, unquote. He alone, by so doing, I quote again, can make the whole man alive, that is, the reader, tremble, unquote. So in today's lecture, Professor Sharma will touch upon issues like why we study literature. He will speak on why reading a novel makes sense. He will talk about types of novel. The discussion will also focus on the relevance of Indian English literature and more specifically, why and how we should read Raja Rav's Kanthapura. Before I hand over the mic to Professor Sharma, I have a few housekeeping items to cover about this presentation. First, today's session will be available on YouTube and Facebook, and
Those who are not able to join us on Zoom can watch the live streaming on these two platforms. So Zoom can accommodate only 100 participants. So a number of the participants have been redirected on YouTube or Facebook. The link has already been shared, and we would like to encourage you to share today's session with your social networks by sharing the YouTube and Facebook link. The question and answer session will be conducted towards the end of the talk. No question will be taken in the middle. So when question and answer session begins, then those on Zoom can unmute themselves and address the question directly to the speaker. And those watching it on YouTube, etc., if you have a question for our speaker, you can write that in the comment box or in the chat box with your name and its institutional affiliation. In case we can't get to your question during today's session, we will definitely follow up afterward, perhaps in the next session. So without any further ado, I would like to kick things off by welcoming our speaker, Professor Pankaj Sharma. So Professor Sharma, over to you now. Thank you very much, Vikas. I am not very good in certain formalities, but still I would like to start this session by thanking RKSD College for giving this wonderful opportunity. For 4 or 5 years since we wrote this book, we had so many questions. So maybe this session would give us that chance. So first of all, I'll thank Principal Dr. S.K. Goyal for providing me this opportunity, and with the permission of the chair, Dr. Geeta Goyal. And it's wonderful opportunity to meet friends like the host, Dr. Rajbir Parashar. He has been almost a friend of mine, so I feel comfortable coming back to a friend. Thanks to Suruchi Sharma, and of course, a big thanks to Vikas, because he has been doing the troubleshooting thing for so long. Vikas, can you please clear it to me whether I'm loud and clear, whether there is any voice issues or something, or should I continue? Okay, Vikas himself is mute, perhaps. It's all right. Yeah, you are loud and clear. You are loud and clear, Pankaj. There is no problem in the sound. Yeah, I could hear it in your lips. So thank you very much. So I seriously, when we were writing this, we were thinking, we were in the process of before I move on, कुछ challenges हैं मेरे इस सेशन के, और मैं परमिशन चाहूंगा हमारी चेयरपर्सन महोदया मैडम डॉक्टर गीता गोयल से कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल रहूं, मैं अंग्रेजी में भी बात करता रहूं और बीच बीच में हिंदी में भी बात करता रहूं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, खासतौर पे ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी अगर बहुत सारी देर तक लगातार चलती रहे तो वो शायद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. दैट माइट पुट देम ऑफ. सो प्लीज अलाउ मी, और ये मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया है. कुछ मेजर चैलेंजेस जब मैं इस सेशन को प्लान कर रहा था, तो कुछ मेजर चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे इसको मीनिंगफुल बनाया जाए और कैसे इसको इंश्योर किया जाए कि जो एक्चुअल यूजर है, जो एक्चुअल स्टूडेंट है बीए थर्ड ईयर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, वो इसको मीनिंगफुली यूज कर सके. तो प्लीज अलाउ मी टू बी बाइलिंगुअल, कि मैं दोनों भाषाओं का कोशिश करूंगा कि इस्तेमाल कर सकूं. और चूंकि मैं हरियाणा से हूं, तो मुझे लगता है हरियाणवी विद्यार्थियों के लिए तो इसमें और बेनिफिट ये हो जाएगा कि मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत हरियाणवी बीच में आ जाए, तो तो मेरी इजाजत मैं चाहूंगा इसके लिए कि मैं चेयरपर्सन महोदया मुझे इसके लिए परमिट करें, और मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि वो इजाजत मुझे इसके लिए दे रही है. तो thanks to all the hosts that we have this session. Yeah, as you all know, for the benefit of all, I want to clear it that we will have 3 sessions, live sessions, Zoom and other technology. Before I forget, I must congratulate Vikas for this special feat, because I used to feel that I am the only one who is good at technology side, handling literature as well as technology. But Vikas has now started giving me goosebumps, because he is able to handle 3 platforms in one go, and I feel slightly envious about it, and I'm conveying it on this platform that
handling it on YouTube along with handling it on Facebook. I've never been the Facebook fan, so I don't know how he's doing it, but he's doing it wonderfully well. I have every reason to believe कि आप लोग इस सेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे जूम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं अपनी जिम्मेवारी को भी निर्वाह करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे एक्चुअल यूजर हैं, जो जिनके लिए सारी ये चीज प्लान की गई है, दे शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। उनके लिए मैं इस सेशन को अगर मीनिंगफुल बना सकूं, एक बात उनके बात तक पहुंच सकूं, तो मुझे लगेगा कि मैं इस सेशन को कुछ फायदेमंद उनके लिए कर पाया, तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको मैं उनसे ये बात करना चाहता हूं। आई वांट टू मेक देम क्लियर एंड अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाई दे आर रीडिंग लिटरेचर। शिक्षा और परीक्षा पे मैं जब भी बोलता हूं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि वो परीक्षा के लिए इस सिस्टम में नहीं है। दे आर नॉट हेयर टू राइट डाउन देयर एग्जाम्स एंड पास दिस एग्जाम। वो 3 साल ग्रेजुएशन में जो रहते हैं वो कुछ सीखने के लिए रहते हैं। वो कुछ सिस्टम, कुछ व्यवस्था, कुछ शिक्षा का जो पूरा ताना बाना है उसकी कोई प्लानिंग है, उसकी एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते हैं। आज के दिन बड़े क्लियरली बात होने लगी है लर्निंग आउटकम की। लैंग्वेज और लिटरेचर जो 3 साल आप पढ़ेंगे और तीसरे साल में आप आ गए हैं, अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि आप लोग जब यहाँ आ गए हैं तो क्या तो आप सीख के आए हैं, क्या आप यहाँ सीखेंगे, और क्या ऐसा होगा जो आप यहाँ सीख के जब आगे जाएंगे तो आपके काम आएगा। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मेरे इस सेशन का लर्निंग आउटकम, आज के पहले सेशन का तो लर्निंग आउटकम यही है, सोच के मैं यही आया हूँ, यही सोच के बैठा हूँ कि आज के सेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कांथापुरा क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक नॉवल क्यों पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता होगा और अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता कि भाई हम क्यों अंग्रेजी पढ़े। बहुत सारे विद्यार्थी शायद इस बात से परेशान मन में रहते हैं कि हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि ये सवाल अंग्रेजी का नहीं है, ये सवाल, ये समस्या भाषा की है। आप अंग्रेजी में भी आपका उतना ही हाथ तंग है, अगर तंग है तो, जितना आपका हिंदी में तंग है। और अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देके ये बात शुरू करता हूँ कि आप अपने आप से ही पूछ लीजिए कि आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, how many of you are able to, without putting pressure on your mind, that you can count your alphabets in English। ABCD आप सब सुना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि हिंदी में आप वर्ण सुनाइए या हिंदी में आप अल्फाबेट सुनाइए, वर्णमाला सुनाइए, तो आप नहीं सुना पाते। तो आप सबसे पहले तो अपने मन से ये क्लियर कीजिए कि आपकी समस्या क्या है ये? आप ये बात समझ लीजिए कि आपकी समस्या अंग्रेजी की समस्या नहीं है, आपकी समस्या भाषा की समस्या है। हम चाहते हैं कि आप कुछ भाषा और साहित्य दोनों के बारे में सीखें, समझें और विकास आप म्यूटेड हैं और कोई शायद बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनम्यूट हो जाते हैं, कर लेते हैं, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस मुझे लगता आती है। तो आप चाहें तो एक बार सबको म्यूट कर दें, मैं भी अपने आप को फिर अनम्यूट कर लूंगा। प्लीज फील फ्री अबाउट इट। Go ahead, Pankaj, please. Yeah, please.
मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये जो लर्निंग आउटकम हम चाह रहे हैं एज ए सिस्टम, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो हम विद्यार्थियों को चाह रहे हैं कि हम कुछ चीजें चाहते हैं कि वो भाषा से, साहित्य से संबंधित, लैंग्वेज से और लिटरेचर से रिलेटेड सम इश्यूज वी वांट देम टू नो, टू अंडरस्टैंड इन द प्रोसेस ऑफ दिस ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन इज परहैप्स the last degree of standard education. ये तो सब खुश है. तो ग्रेजुएशन या स्नातक जो पहले आप ही ग्रेजुएशन स्नातक जिसको हम कहते हैं, उस विद्यार्थी से कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि वो कुछ भाषा का इस्तेमाल कर सके, टिपिकल लैंग्वेज वो यूज करके बात कर सके, लिख सके, और साथ साथ हम कुछ उसके एस्थेटिक्स डेवलप करना चाहते हैं. लैंग्वेज से हम उससे कुछ कम्युनिकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, वो लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, सुन सके, समझ सके, जाके डिस्कशन कर सके, सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके, जॉब पे, प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेट कर सके. वहां तक तो लैंग्वेज का हिस्सा रहता है. अब प्रश्न कई बार ये आता है, बच्चा कई बार ये जानना चाहता है कि मैं नॉवल क्यों पढ़ूं या मैं लिटरेचर क्यों पढूं. तो उसका एक बड़ा सरल जवाब उसको मैं चाहता हूं कि वो यहाँ इसके माध्यम से समझे कि हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ साहित्यिक एस्थेटिक्स डेवलप हों, बिकॉज लाइफ स्किल है ये. साहित्य पढ़ना, साहित्य बड़ा सरल है, इसको ये कह देना कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन इसकी गहराई हमें समझनी चाहिए. साहित्य जीवन में जिन लोगों ने जीवन को जिया है और उन्होंने अपने अनुभव साझे किए हैं, उन लोगों ने साहित्य लिखा है, और उन लोगों के अनुभव से हम अपने जीवन को बिना उन परिस्थितियों, बिना उन कठिनाइयों, बिना उन प्रॉब्लम्स में जाए, वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ बेटर. लिटरेचर इज द फाइनर साइड ऑफ लाइफ. लिटरेचर जिंदगी की कंपैशन को हमें समझाता है कि कैसे दूसरे इंसान के सुख दुख में, उसके कष्टों में, उसके अनुभवों में, उसके जीवन के प्रति नजरिए को हम साझा कर सकें. उदाहरण के लिए आप यही समझिए कि कंथापुरा जब लिख रहे हैं राजा राव, तो वो एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं. आप इस नॉवल के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से आप उस दुनिया में घुस सकते हैं और उस दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, that how in 1938 in Salem or in South India how a village life was existing. और ये जीवन के अंदर एक घुसने का रास्ता है साहित्य, जो आपको, हम चाहते हैं कि साहित्य का स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक आते आते कम से कम एक नॉवल पढ़ ले, कम से कम एक टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर ले, क्योंकि उसको एक जब आप पहली बार बड़ा नॉवल देखते हो, या अगर आपको पहली बार 400-500 पेज का उपन्यास जब आप देखते हो, तो बड़ा लाजमी है कि ये क्वेश्चन मन में आना कि मैं इसको पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा. लेकिन जब आप उसको टेक्स्ट लगा देते हैं, क्लासरूम में लगा देते हैं, टीचर आपका हैंड होल्डिंग करता है, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, तो उस प्रोसेस में वो टीचर के और आपके करिकुलम के प्रोसेस में आप एक नॉवल पढ़ जाते हैं, और नॉवल के प्रति आपका जो डर है, जो चिंताएं हैं, वो दूर हो जाती हैं. आप नॉवल की जो इंट्रिकेसीज हैं, उस टेक्स्ट को कैसे एक्सप्लोर करना है, 300 पेज का, 400 पेज का टेक्स्ट पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे आपको पहले शब्द से एक तार को पकड़ के रखना है. कैसे आपको एक टेक्स्ट के से डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, और लिटरेचर की डिफरेंट फॉर्म्स को आपने कैसे पढ़ना है, क्या उनमें पढ़ने का, समझने का होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपने आप 6-7 से भी अगर आपने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की है, सो यू हैव बीन एक्सप्लोर. आपको पोएट्री सबसे पहले हम पढ़ाना शुरू करते हैं, छोटी पॉइंट से पढ़ाना शुरू करते हैं, बड़ी पॉइंट्स पे जाते हैं, नैरेटिव पॉइंट्स पे जाते हैं, इवन एपिक के भी कुछ पोर्शन हम ग्रेजुएशन तक कोशिश करते हैं कि बड़ी कविताएं जो हैं, जो 60-100-200 लाइन तक की कविताएं भी कई बार कोशिश की जाती है कि आप वो पढ़ लें. फिर कविता से कोशिश की जाती है, कविता के साथ साथ कि आप प्रोज पढ़ लें, एसेज पढ़ लें. ग्रेजुएशन में अब तक आपने
फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने पोइट्री डेफिनेटली पढ़ी होगी। आप पोइट्री को देखना पढ़ना समझ जाते हैं, कैसे रूपक अलंकार का, कैसे उपमा अलंकार का, हाउ वी यूज symbols in poetry, how poetry develops an idea, how a thought is conveyed to you through poetry. So genre, जिसको जो आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, GENRES, ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका होता है यान या genre, और प्लूरल होता है यानर्स या जॉनर्स। जॉनर एक रूप है, साहित्य का एक प्रकार है। जैसे पोइट्री एक जॉनर है, प्रोज एक जॉनर है, ड्रामा एक जॉनर है, नॉवेल एक जॉनर है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक और जॉनर है। तो धीरे धीरे हम 3 साल में हमारी कोशिश होती है कि आप इन जॉनर्स को, हालांकि आप स्कूल में भी 10th 12th तक भी आप पोइट्री पढ़ लेते हैं, प्रोज पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं वन एक्ट प्ले भी पढ़ लेते हैं, और अगर किसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ के हैं तो शायद आपको कोई नॉवल भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। बट ग्रेजुएशन में वी वांट टू एंश्योर दैट यू आर clear about all the genres, how they work, how they exist, what are the basic tenets of all these genres. That's why we want you to read literature. Literature इसलिए भी हम आपको पढ़ाते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन कर जाएंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो जस्ट डू ग्रेजुएशन एंड देन दे विल फाइंड जॉब, ऑल पॉसिबल जॉब्स, चाहे वो जॉब फौजी की है, या चाहे वो जॉब पुलिस की है, या चाहे वो जॉब कोई सिविल सर्वेंट की है। आपको शायद मालूम होगा कि इवन आईएएस बनने के लिए, एचसीएस बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, उससे आगे की जरूरत नहीं है। तो यहां तक हम ये मानते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो आप चाहे फौजी भी बन जाएंगे। अगर आपको नॉवल पढ़ना, हमने यहाँ नॉवल से आपको एक्सप्लोर करना सिखा दिया, नॉवल को पढ़ना समझना सिखा दिया, तो आप शायद कहीं दूर लद्दाख में बैठ के, सियाचिन में बैठ के अपनी ड्यूटी जब आप ऑफ करेंगे, उस वक्त आप अपने मजे के लिए, रिक्रिएशन के लिए, बेहतर समझ के लिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए, हो सकता है आप कोई नॉवल पढ़ना चाहें। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि क्यों सिस्टम में आपको लिटरेचर पढ़ना, नॉवल पढ़ना सिखाया था। इसलिए एक लर्निंग आउटकम्स का एक मेजर पार्ट ये है, हम ये समझाना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से आपको, कि आप ग्रेजुएशन में लिटरेचर की सारी फॉर्म्स को क्लियर कर लें, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। हम प्राइमरली अंग्रेजी की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टेक्स्ट रिटन इन इंग्लिश, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ये इसमें मैंने आपको बताया कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ाना चाहते हैं आपको। अब उससे अगला सवाल ये है कि लिटरेचर का एक फॉर्म जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, that we want you to read again and again, is novel. As the very word novel suggests, if you look for the word novel in dictionary, the meaning of this word novel is new. And why it is new? Why it is a new? Because it was a new genre. Perhaps it was the latest form of literature that came in English literature. You will be surprised to know that though it has been, शायद पिछले 200-300 साल से नॉवल लिखा जा रहा है, लेकिन नॉवल में तो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। नॉवल को पोइट्री में भी आके बाद में विक्रम सेठ ने गोल्डन गेट लिखा है, जो कि पोइट्री में लिखा हुआ है। नॉवल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। 1708 में जो 17 पहले दशक में 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी में नॉवल आना शुरू हो गया था, पहले 100 साल में तो उसमें कोई 20 बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, और अब भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। इवन पिछले 5-7-10 साल में भी आप देखें तो बड़े नॉवल में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आपको शायद मैंने किसी और सेशन में बताया भी है, बात भी की है कि अब तो मशीन्स तक के नॉवल लिखे हुए आने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उस स्टेज पे पहुंच गई है कि मशीन नॉवल 300 साल में नॉवल में चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन नॉवल शायद लेटेस्ट जॉनर है अंग्रेजी में। इसके बाद कोई बड़ी जॉनर का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम नॉवल पड़ा, न्यू पड़ा। नॉवल हम क्यों चाहते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट नॉवल पढ़े? क्यों हम चाहते हैं, क्यों हमने प्रिस्क्राइब किया है आपको कि कांथापुरा स्पेसिफिकली क्यों किया है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही बताऊंगा।
नॉवल क्यों हम चाहते हैं कि आप पढ़ लें? व्हाई ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन शुड रीड, मस्ट रीड, वी इंश्योर दैट ही रीड्स ए नॉवल। कि सबसे पहला तो जैसा मैं बार बार लगातार कह रहा हूं आपसे कि आप लोग बड़े टेक्स्ट को हैंडल करना सीख लें। आपको नए विद्यार्थी को बड़ी बड़ी सरल है कि आप उसको अगर पहले दिन वॉर एंड पीस 1800 पेज का नॉवल है, अगर वो आप उसको दे दें पढ़ने के लिए तो वो बेचारा डर जाएगा, घबरा जाएगा। इवन स्कॉलर्स डर जाते हैं बड़े टेक्स्ट को देख के। वैसे ही जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो हो सकता है आप में से ज्यादातर ने नॉवल नहीं पढ़ा हो, हम ये एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस जॉनर को, इस टाइप ऑफ लिटरेचर को से अपना डर निकालें, खौफ निकालें, आप इसके अंदर एंटर करें, इसको हैंडल करना सीखें, इसको कैसे यूज करना है, कैसे जिंदगी का एक फलसफा ये हमें समझाता है, वो हम समझें। हम चाहते हैं, वी वांट यू टू रीड द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द नॉवल, क्योंकि आप ताकि समझ सकें कि कैसे 200-250 पेज के नॉवल में आप कैसे कैरेक्टर्स को याद रखना है, कैसे कहानी को याद रखना है, कैसे आपको ये याद रखना है कि पहले इस कैरेक्टर ने ये किया था, अब ये कर रहा है। सेंट्रल कैरेक्टर को तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ इंटरेस्ट की चीजें जो आ रही हैं, आपको जिंदगी के बारे में जो वो बता रहा है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, शायद आपको स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दैट नॉवल इज ए पाई ऑफ लाइफ। पाई आप समझ सकते हैं, केक जब आप खाते हैं तो केक का आप कहीं से भी टुकड़ा अगर बराबर काटते हैं, ऊपर से नीचे तक काटते हैं, तो वो सारा केक आप उस छोटे से टुकड़े को टेस्ट करके ही आपको केक का सारे का टेस्ट पता चल जाता है। वैसे ही नॉवल इज ए पाई ऑफ लाइफ। पाई ऑफ लाइफ एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, एक ऐसी चीज है कि आप उस 200 पेज को पढ़ के, 250 पेज को पढ़ के आप उस वक्त की, उस समाज की, सोसाइटी की और उस समय की, काल की, देश की, नेशन की बहुत सारी रियलिटीज आप समझ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस फीलिंग दैट दे फॉलो द कैरेक्टर, द सेंट्रल कैरेक्टर, or maybe as you are more adaptable to words like hero and heroine, that you come to know about hero, about his likings, his dislikings, what kind of life he had and how he moved on in life. But इससे भी बड़ी बात जो आप समझ पाते हैं, वो उस देश और काल को समझ पाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, पिछले 20-30 साल में, 40 साल में इस पे काफी काम हुआ है कि हिस्ट्री बहुत सारी जगह मिस कर गई बहुत सारी बातें बताने में, क्योंकि हिस्ट्री तो मोटे तौर पे राजाओं की और देशों की बात बताती है, संस्कृति की, कला की, व्यक्तियों की, आम आदमी के जनजीवन की, हाउ ए कॉमन मैन यूज्ड टू लिव इन पर्टिकुलर टाइम। हिस्ट्री इज नॉट एबल टू टेल दैट। लिटरेचर इज सर्विंग दैट पर्पस। बहुत बड़े हद तक, बहुत बड़े मामले में लिटरेचर वो कमी हिस्ट्री की पूरी करता रहा है कि आप जब शेक्सपियर का फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैकबेथ पढ़ा है तो 1603-4 के दौरान लिखा गया वो मैकबेथ ये बताता था कि कैसे जब शासन व्यवस्थाएं बदलती हैं तो किस तरह का माहौल होता है, और उसी वक्त इंग्लैंड में शासन व्यवस्था बदल रही थी, तो उस वक्त की सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। तो नॉवल ज्यादा कर पाता है, आगे मैं और इस पे बात करूंगा कि ड्रामा का टारगेट होता है रिक्रिएट करना लाइफ को। पोएट्री अपने आप में बहुत छोटी बात कर पाती है। छोटी गहरे से मेरा मतलब नहीं है, छोटे से मेरा मतलब है कि 10 लाइन में, 20 लाइन में, कभी कभी एक लाइन भी बहुत गहरी बात कह सकती है, लेकिन एक लाइन में कहीं गहरी बात को समझने के लिए बहुत गहराई होनी चाहिए, एक्सप्लेन नहीं करती। नॉवल की अच्छी बात यह है कि वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करता है, तो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, एक सोसाइटी को, एक देश को, काल को, समाज को बता पाता है नॉवल। और मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड एंटरटेनमेंट, बिकॉज especially in today's society this seems to have become almost a taboo. Entertainment is considered to be something that gives you happiness, but I feel that the right meaning of entertainment is where you feel happy as well as enlightened, where you learn something about your own life, about the life around you, about the life somewhere in the world. So novel is for me, it is the entertainment, because it enlightens you, gives you knowledge, gives you ideas, gives you thought,
and it makes you happy as well. आप किसी दूसरे आदमी की खुशी में खुश हो लेते हैं। शायद बेकन का वैसे आपने पढ़ा होगा कि खुशी बांट लेने से दोहरी हो जाती है, गम बांट लेने से आधा हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट सिर्फ खुशी नहीं है, गम बांट के किसी का गम बांट के आधा कर लेने का भी एक एंटरटेनमेंट है। सो लिटरेचर enters you, makes you enter that world, and novel definitely is all the more successfully doing it, can do it. तो इसलिए हम नॉवल आपको पढ़ाते हैं। इसका लर्निंग आउटकम ये होता है कि आप ये सारी चीजें समझ सकें, आप इन सारी चीजों को एंजॉय कर सकें। अब सवाल ये है कि इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ते हैं, तो पहली बात तो ये कि हम इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, और फिर उसके बाद हम अगली बात करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम सब जिस देश में रहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में भाषा एक बड़ा राजनीतिक मामला है। मैं उसकी राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इस बात से भी इतना समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने लगता है तो हरियाणवी विद्यार्थी को वो भी ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेंच में बात कर। तो अकेली हिंदी के 20 वेरिएशंस हैं, और अपनी वेरिएशन जिस तरह की हिंदी हरियाणवी वो विद्यार्थी बोलता है, उससे थोड़ी सी भी अलग वेरिएशन उसको सुनने को मिलती है तो वो बड़ा अजीब महसूस करता है। और आप हिंदी से आगे बढ़ जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते, नहीं सीखना चाहते। और इससे खूबसूरत दिन क्या होगा, आज लोहड़ी के दिन हम ये सेशन कर रहे हैं, मकर संक्रांति मनाई जा रही है, ओणम मनाई जा रही है। दक्षिण भारत में अलग तरह से इसको मनाया जा रहा है, उत्तर भारत में अलग तरीके से मनाया जा रहा है, पंजाबी संस्कृति में अलग तरीके से मनाया जा रहा है, सनातन धर्म में अलग तरीके से मनाया जा रहा है। तो हम बहुत सारी संस्कृतियों का अमलगमेशन है, और मैं इस बात को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझता हूं कि ये भी राजनीतिक बात है कि अंग्रेजी हमें यूनाइट करती है, और मैं इसकी राजनीति से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। आई एम नॉट अनअवेयर ऑफ दिस पॉलिटिक्स that how English unites us in a sense, but let us look at the positive side of it. Not only English unites us, but it is a passport for global culture as well. हम लोग दुनिया में आज बात कर रहे हैं कि भारत एक महाशक्ति बन के उभरा है। हम बात कर रहे हैं कि बीपीओ से हमें हिंदुस्तान में काम आ रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बड़े आराम से जाके और यूरोप में, अमेरिका में काम कर पा रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वी आर लिटरेट इन इंग्लिश। When we go to Europe, when we go to America, we don't have to learn their language. So when we study English, we actually get a passport to operate on the universal level. इसलिए हम आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजी और अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, समझें। You become better equipped with English because we want you to operate on the universal level. उसकी negative aspects भी हैं, and I am very much aware of it. मैं उसकी भी बात अभी आपसे करूँगा. But first, let's talk of the positive sides of it. English not only makes you operate on the universal level, it gives you kind of confidence that you are not less than anybody. ये हमारी गलती है कि हम अंग्रेजी बोलने वाले को, हर आदमी को सोचते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, या अंग्रेजी में कही गई हर झूठ को भी हम सच मानने को तैयार हों। this is where we lack. English is as good a language as Hindi is, or for me, I'm saying it on this platform, Hindi is much closer to my heart than English is because it is my mother tongue. I have been earning for 25 years now. I have been earning by speaking English or by becoming a teacher in English. But I feel pity on people who say that they are Anglophile. They love everything English. I just don't understand that logic. I love my country. I love my Hindi. And as a student of literature, as a teacher of language and literature, English, I have chosen English.
I have been student of English, but I do not feel that Hindi in any sense is less than that. अंग्रेजी आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाने का पासपोर्ट देती है, आपको इंटरनेशनल जॉब्स में जाने की पोजीशन देती है, और इंडिया में भी ज्यादातर ऑफिशियल वर्क जो है वो अंग्रेजी में होता है, कोर्ट का वर्क अंग्रेजी में होता है। इसलिए बहुत सारी जॉब्स आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप अंग्रेजी को ही भाषा के तौर पे जानें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजी जब भाषा को जाने तो उसके साहित्य को भी जाने, लेकिन साथ साथ we must localize it. We should not. When I'll come to Kanthapura, why we chose Kanthapura as a novel, we could very easily later on also, so many of our colleagues always raise this question to us: why not a novel of Hardy? Why didn't you prescribe a book by Dickens or Hardy, or for that matter, even there could have been writers like Russian writers like Dostoevsky or French writers like Gustav Flaubert. उनको भी अंग्रेजी में हम पढ़ा सकते थे, but we definitely, before I forget, I am speaking here on behalf of two of my colleagues more who are not physically present here, and nor I have taken their permission, but Professor Umed Singh and Professor Dikti Dharmani, who have been the team. We three have decided on this book and have written this book, co-edited this book. So I'm sharing what we three of us shared, and I'm sorry I should have taken their permission, but I feel that they are gracious enough. They will permit me to speak on this on their behalf as well. So we want you to understand that we as users of English, we have to localize it. And American English is a wonderful example. When America got independent in 1776, they were basically a colony of Britain and France. And they were basically people who had gone from Europe to America. लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को as such एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजी को अपने तरह से तब्दील किया और फिर उसको एक्सेप्ट किया। उसी तरह से मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग अगर इंग्लिश यूज करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जवान बच्चे ने इंग्लिश में एक नॉवल लिखा है किंडल पे, वो मैं पढ़ रहा था और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये एक पॉसिबिलिटी है। इंग्लिश आप समझते हैं ना, जब आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हैं, जिसमें जब आप लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ, MAIN, मैं जा रहा हूँ, so even that is a possibility. We have to localize English as much as we can, and we have to standardize it later on as well. तो हम जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ा रहे हैं या हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी है, और वो राजनीति ये है कि जिसको अंग्रेजी में हम पोस्ट कॉलोनियल स्टांस कहते हैं, कि अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने हम पे अंग्रेजी थोपी, अंग्रेजियत थोपी, हमारी सारी व्यवस्था को बदल दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, हमारे खान पीन को पान को बदल दिया, हमारे रहन सहन को बदल दिया, हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल दिया। अब हम अतीत में जाके उसको वापस तो नहीं बदल सकते, हम कितनी भी कोशिश करें यहाँ से रेस्टोर करने की, कि हम वापस अपनी संस्कृति पे वापस जिस तरह थे वैसे ही चले जाएं, तो वो ड्रीम बेशक है हमारा, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। दैट्स ए फैक्ट। सो by reading English literature and localizing it, we are doing a kind of post-colonial stance. और उस post-colonial stance को आप समझ सकते हैं, आप में से खासतौर पे जो टीचर्स इस बात को सुन रहे होंगे, उनको जरूर याद होगा, शायद 2001 में एक नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल में इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हरा दिया, और उस फाइनल में 326 शायद स्कोर बना था, और इंडिया ने उनको हरा दिया, और हरा के सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट निकाल के और उसको फहराया। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ क्रिकेट तक समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एक स्पोर्टिंग मोमेंट तक समझते हैं, लेकिन ये पोस्ट कॉलोनियलिटी का, अंग्रेजों के राज के बाद का एक बड़ा मोमेंट है, जब हमने अंग्रेजों को अंग्रेजों के खेल में, अंग्रेजों के सबसे बड़े ग्राउंड लॉर्ड्स में, जो कि लॉर्ड्स का ग्राउंड है, जो कि
क्वीन का ग्राउंड है, जो कि इंग्लैंड के राजपाट का ग्राउंड है, वहां उनको इतने बड़े स्कोर बनाने के बाद उनको हराया। लॉर्ड्स में जहां ज्यादातर दर्शक नेकटाई और कोट पहन के बैठ के मैच देखते हैं, वहां एक हिंदुस्तानी नजरिए से शर्ट उतार के उसको फहरा देना, वो एक पोस्ट कॉलोनियल स्टांस था। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये बातें और समझ में आएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें, आपको उसकी नजदीक जाएं, उसको समझें कि कैसे हिंदुस्तानी, आज बड़े नाम, 3 नाम आपको स्क्रीन पे लिखे दिखाई दे रहे हैं, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी। These are the names which are of course Indian, and which are perhaps the most famous names on the world literary arena today. 21वीं शताब्दी के पहले 20 साल में अगर किसी भी अंग्रेजी पढ़ने वाले से आप 10 लेखकों के नाम पूछें, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इन 3 में से एक नाम, 2 नाम जरूर आएगा, जुम्पा लहरी का नाम उसमें आएगा। ये सब इंडियंस हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से कोई ब्रुकलिन में बैठ के लिख रहा है, कोई लंदन में बैठ के लिख रहा है, कोई न्यूयॉर्क में बैठ के लिख रहा है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ। हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि राजा राव और आर.के. नारायण की तरह दिल्ली में बैठ के, खैर उस पे भी मैं आऊंगा। राजा राव ने भी, जो ये नॉवल है, ये शायद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रांस में एक किले में बैठ के एक होस्ट के फायदे पे ये नॉवल कांथापुरा लिखा था। हाँ, लिखा इंडिया के बारे में। वैसे ही विक्रम सेठ के नॉवेल्स में सुटेबल बॉय, आपने हो सकता है इन दिनों में नेटफ्लिक्स पे शायद उसका एक सीरीज आया है, आपने देखा हो। अमिताभ घोष बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, सलमान रश्दी बहुत दुनिया में मशहूर है, लेखक हैं, जुम्पा लहरी बहुत मशहूर हो गई हैं आजकल, और बहुत सारे इंडियन राइटर्स जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो आ रहे हैं। और वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे आपको ये समझना जरूरी है कि दुनिया में अंग्रेजी लेखन में आज इंडिया एक बड़ा नाम है, क्योंकि हमने अंग्रेजी को अपनाया, लोकलाइज किया, और फिर हम दुनिया के पटल पे छाए हुए हैं आज। ये एक बात है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इंडियन इंग्लिश नॉवल, इंडियन लिटरेचर की तो बात आप समझ गए, तो इंडियन इंग्लिश नॉवल क्या है? इंडिया में लिखा जाने वाला, अंग्रेजी में लिखा जाने वाला नॉवल किस तरह का है? अभी when we started this session, Vikas was introducing, saying that in 1920s it started. If I'm not wrong, the first Indian English novel was in Rajmohan's Wife was published, if I'm not wrong with the year, if my history memory of Indian English literature history is okay, it came out somewhere in 1865. तो उतरती 19वीं शताब्दी में इंडिया में अंग्रेजी नॉवल लिखा जाने लगा था। हाँ, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं लिखा जाने लगा था। पहले 2 नॉवलिस्ट जिन्होंने इंडियन इंग्लिश नॉवल को इंडियन बनाया और इंग्लिश भी रखा, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आर.के. नारायण और राजा राव, ये 2 राइटर्स हैं जो आजादी से पहले लिख रहे थे, 1947 से पहले लिख रहे थे। हालांकि बाद में भी इनके कुछ नॉवल आए, लेकिन अंग्रेजों के राज में भी, जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे 47 से पहले भी ये लोग लिख रहे थे, इंग्लिश में लिख रहे थे, अंग्रेज भी इनको पढ़ते थे, और इनका नॉवल इंडियन नॉवल था। वो किसी भी तरह से, भाषा जरूर उसकी अंग्रेजी थी, लेकिन वो इंडियन थे उसकी ट्रू सेंस में। इसको हम और डिटेल में बात करेंगे। कांथापुरा भी इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, और कांथापुरा को चूज करने के पीछे भी एक ये बड़ी सोच थी कि हम एक इंडियन इंग्लिश नॉवल हो, एक वेस्टर्न नॉवल ना हो। एक हार्डी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, डिकन्स बहुत खूबसूरत लिखते हैं, डीच लॉरेंस बहुत बढ़िया लिखते हैं, वर्जीनिया वुल्फ बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी राइटर्स हैं जिनके नॉवेल्स बहुत खूबसूरत लिखे होते हैं। बट वी एज टीम ऑफ एडिटर्स, हम चाहते थे that our students should read Indian English novel. Why we wanted it? Because वही बात जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी कही थी, लोकलाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजी को अंग्रेजों की अंग्रेजी की तरह ना पढ़ें, हिंदुस्तानी अंग्रेजी का एक नई जगह बनाएं, उसको पढ़ें, समझें, और उसको अपने भाषा की तरह इस्तेमाल करें, उसको लोकलाइज करें, अपने तरीके से करें। लोकलाइज करने को मैं बता दूं, समझा दूं कि सिर्फ भाषा नहीं होती लोकलाइज, कल्चर की सारी चीजें लोकलाइज होती है। फॉर एग्जांपल, जो पिज्जा आप खाते हैं, पिज्जा आप खाते हैं, वो इटालियन जरूर है, लेकिन इटली में वो ठीक वैसे नहीं बनता जैसे आप खाते हैं।
ऐसे ही जो चाइनीज फूड है, अगर आप खाते हैं तो जब आप उसको अगर चाइना में जाके कभी खाएंगे तो आपको वो बहुत अलग टेस्ट का लगेगा। तो हमने फूड्स को, कपड़ों को इंडियनाइज कर लिया है। ऐसे ही हमने भाषा को इंडियनाइज करना है। हम चाहते हैं कि आप उस इंडियनाइज इंग्लिश को समझें, इसलिए बार बार लगातार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लैक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पे काफी बोला भी है, लिखा भी है कि फिजी से लेके गयाना तक भारत के लोग जाके गन्ना बीज रहे थे, गेहूं बीज रहे थे। दुनिया के बहुत सारे टॉपिक भेजे हैं, मैं वो निकाल ले, वो स्क्रीन का फॉर्मेट देती जाऊंगी। यही है कि सेमिनार का सिलेबस है, तो क्या सेमिनार? अरे तू जा ना यहाँ से, कहाँ पर है बैठ के मेरा। तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां हिस्ट्री हमें कुछ नहीं बताती। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लेबर गई इन सारे देशों में और वहां जाके इस लेबर इस पे ऑन ना हो जाए, मेरा गंदा बोल कैसे वो लेबर गई इतने सारे देशों में। आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए, कोई बुक आपको हिस्ट्री की वो डिटेल में नहीं बताएगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अमिताभ घोष की एक आइबिस ट्रिलॉजी करके है, 3 किताबों की एक सीरीज है, आइबिस ट्रिलॉजी कहा जाता है उसको। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, 3 किताबें हैं। आप उनको पढ़ लें तो वो आपको बहुत सारी बातें बताती हैं कि कैसे जहाज भर के उनको ले जाया गया, किन परिस्थितियों में वो बेचारे रहे, कैसे उन्होंने खाने खाए, किस वहां जाके वहां के खाने को कैसे। फॉर एग्जाम्पल, रिवर ऑफ फायर में एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे समोसों में फिलिंग भरने के लिए आलू नहीं थे तो उन्होंने कैसे चाउमीन भर के समोसे बनाने वहां शुरू किए। तो इंडियनाइज मैं आपको कह रहा हूं। तो जो खाने को इंडियनाइज करना है, कल्चर की जो इतिहास है उसके बारे में हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आम आदमी की जिंदगी कैसे हुई 1838 में, जब चाइना में लड़ाई हो रही थी तो हमें लगता है कि वो तो चाइना में लड़ाई हो रही थी, वो तो अंग्रेजों और चाइना की लड़ाई हो रही थी। जब आप नजदीक से कोई बुक्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत की फौजें लड़ रही थी इन अंग्रेजों के नाम से। आपने पढ़ा है कि 1942 में कैसे इंडियन नेशनल आर्मी और इधर से ब्रिटिश रॉयल आर्मी, दोनों में भारतीय फौजी लड़ रहे थे। अगर आप कोई हिस्ट्री की किताब ढूंढना चाहें तो शायद आपको ना मिले, लेकिन मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं कि आप अमिताभ घोष का नॉवल पढ़ लीजिए, द ग्लास पैलेस। उसने डिटेल्स आपको दिए हैं कि कैसे दोनों तरफ से भारतीय लड़ रहे थे। तो इंडियन हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडियन इंग्लिश नॉवल पूरी करता है। कांथापुरा जब आप पढ़ते हैं तो साउथ इंडिया के गांव कैसा था 1938 में, 1935 में, ये आपको शायद हिस्ट्री की कोई बुक ना बताए, लेकिन कांथापुरा बड़े आराम से बता सकता है। इसी तरह फ्रीडम स्ट्रगल को लेके आपको लीडर्स पे तो बुक्स मिल जाएंगी कि गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया, भगत सिंह जी ने क्या किया। लेकिन एक आम जनसाधारण में वो किस तरह से भावना बढ़ रही थी, you won't hardly find much historical books on this. Even if there are incidents like Chori Chora and other such historical incidents, you might find a book on them, but how it was spreading over throughout. 1857 को लेके भी पिछले 20 साल को छोड़ दीजिए तो उसको गदर ही कहते रहे अंग्रेज, कोई फ्रीडम स्ट्रगल मानने को तैयार नहीं था। बट नॉवल एक्चुअली प्रूव्ड इट, इंडियन इंग्लिश नॉवल हैज डन दिस रिमार्केबल जॉब। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास एक भाषा नहीं है। आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। और क्रिकेट, सिनेमा और अंग्रेजी, मुझे लगता है ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इंडिया को एक सूत्र में बांधती है। आई एम अशेम्ड ऑफ सेइंग इट। अच्छा होता है एक भारतीय भाषा होती, अच्छा होता है हिंदी ये काम कर पाती, लेकिन जमीनी हकीकत ये है दैट इट्स नॉट बीइंग डूइंग इट, एटलीस्ट नाउ। फ्यूचर में हम सब चाहेंगे कि ऐसा हो, बट इंग्लिश इज समथिंग दैट होल्ड्स इंडिया टुगेदर। आप साउथ इंडिया में भी जाके अगर आपको कुछ चंद अंग्रेजी के शब्द आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। कोलकाता में भी चल जाएगा, गुजरात में भी चल जाएगा,
हरियाणा में भी चल जाएगा, शायद जम्मू कश्मीर में भी चल जाएगा, शायद किसी एक भाषा से इन सब जगहों पे आपका काम अंग्रेजी के अलावा किसी से नहीं चले। इसलिए भी हम आपको इंडियन इंग्लिश नॉवल और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर चाहते हैं कि आप समझें। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये लिटरेचर में भी क्लियरली नजर आए आपको, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये सब पढ़ें। Now the question is, why Raja Rao? When we decided on these writers, why we decided on Raja Rao and why we decided on Kanthapura, these are the two things that I want you to understand, and this should be helpful in your knowledge as well as understanding of literature, language, your own course, your own syllabi. That should help you in knowing and understanding this. First and foremost is that we wanted to ensure that there is an Indian writer that we prescribe, and even among Indian writers we had many choices. I'm talking about Amitav Ghosh for a long time, I'm talking of Salman Rushdie, I'm talking of Vikram Seth, I've already talked of a lot about R.K. Narayan, Raja Rao, but then why Raja Rao? That's where I want you to understand this, that we want somebody who is typical Indian, which is its essence is Indian. The theme of the novel, we wanted to pick up a novel जिसका central theme जो है वो Indian हो, close to our heart हो. If you read Kanthapura, the theme of the novel is very close to Indianness. We Indians are in habit of looking at everything from religious point of view. अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो हम कहते हैं राम राज आ जाए, अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम बोलते हैं राम राम. राम और हिंदू गॉड इज सेंट्रल टू आवर एवरी सिंगल थिंग. हम छोटी से छोटी चीज में कोई चोट लगे तो हाय राम हमारा एक्सप्रेशन होता है. तो राम या धर्म या भगवान हमारी हर छोटी से छोटी चीज में है, और वो हमारे जीवन जीने की शैली है, which is how we Indians live. And maybe for foreigners it may not be easy to understand that how in every small thing we have God, we have Ram in every small thing, but that's how we Indians are. थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव फोर्सेस होती है तो हम बार बार बात करते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है कि जब समस्या होगी तो भगवान खुद मानव रूप लेके पृथ्वी पे आएंगे, और उसको हम अलग अलग रूपों में देखते भी. हमारा बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि जीवन में जब ज्यादा बुराई बढ़ जाएगी तो भगवान अपने आप आएंगे और उस बुराई को खत्म करेंगे. तो वो जो इस नॉवल का थीम है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉवल मूर्ति के बारे में जरूर है, ये नॉवल कांथापुरा गांव के बारे में जरूर है, लेकिन ये नॉवल है कि कैसे हम ये मान लिया हमने कि ये अंग्रेज जो हैं ये नेगेटिव फोर्सेस हैं, डेविल हैं, राक्षस हैं, और इस राक्षस को हराने के लिए कैसे कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाएंगे, कैसे भगवान राम आएंगे किसी रूप में. वो अलग अलग नेताओं का, अलग अलग देवताओं का रूप स्वरूप अलग अलग कैरेक्टर में डाल के राजा राव ने दिखाया है. लेकिन जो बेसिक इंडियननेस है कि कैसे हम इंडियन हर छोटी से छोटी चीज को, छोटी से बड़ी चीज को, सिर्फ छोटी नहीं, छोटी भी और बड़ी भी, even if bigger things are there, smaller things, लाइफ फिलोसफी भी, मैक्रोस को लेके भी, स्टेट से बड़ा कोई मैक्रो नहीं होता. हम क्या कहते हैं, राम राज आ जाए. छोटी बात में भी हम चोट लगे पे भी हाय राम बोलते हैं, नमस्ते में भी राम राम बोलते हैं. सो गॉड राम is central to our living. And if you look at Kanthapura, you will be, maybe you have not read it from this point of view, but now if you read it, how it starts, the beginning of the novel, especially the beginning as well as the ending of the novel, has been Indianized, specifically Indian in this feeling that it creates the kind of mythological situation, mythological parallel, that Ram will come, that Krishna will guide Arjun to kill even if his own people are in front of him. अब अंग्रेज भी, पुलिस भी उन्होंने भारतवासियों की बना रखी थी, फौज भी उन्होंने भारतवासियों की बना रखी थी, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ा रहे थे. तो हमें कई बार ये मन में सवाल आता था कि यार मैं जिससे लड़ रहा हूँ अंग्रेज से थोड़ी लड़ रहा हूँ,
वो पुलिस वाला तो भारतीय है, वो डंडे मारने वाला हाथ पुलिस वाला तो भारतीय था, वो फौजी तो भारतीय था, बट उसमें वो कृष्ण की महाभारत की वो खुद से भाइयों से लड़ने की जो जो फिलॉसफी अर्जुन को कृष्ण देते हैं कि आप सही काम करो, अपना काम करो, जिम्मेवारी करो, किससे लड़ रहे हो ये मत देखो, गलत से लड़ रहे हो, सामने भाई है या कोई और ये मत देखो, गलती से लड़ रहे हो, वो गलत काम से लड़ रहे हो वो देखो। तो वो इंडियनाइज थीम है राजा राव के कांथापुरा में। ये एक समझने की जरूरत है, बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। वो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कंथापुरा को पढ़ें और ये चीज अगर आपने मिस कर दी तो आपने नॉवल की जो सेंस है, जो हार्ट है, जो 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 सेंट्रल कोर है, देन यू हैव मिस्ड इट। सो theme of the novel, there might be 100, you go to L books, they will tell you 100 things about it, but the central theme of Raja Raw's Kanthapura is that how in 30s there was a kind of movement in India which further became the Indian freedom movement, how Gandhiji was giving it the moral force, mythological force, how Nehru, Gandhi and other Indian freedom fighting leaders were visualized as descendants of God, as personifications of Ram and Krishna and Arjun. And if you read earlier part and especially the last part of the novel, you will come to believe it. Second thing, that why we wanted Raja Rao and why Raja Rao is an important writer, that the setting that he has given. You see, the novel is titled, the very title of the novel is on the setting, the village Kanthapura. And Kanthapura is not Kanthapura particular. It can be any village. वो जींद का संगतपुरा भी हो सकता है, वो रोहतक का लाखन माजरा भी हो सकता है, वो पानीपत का उगरा खेड़ी भी हो सकता है, वो सिरसा का खाजा खेड़ी भी हो सकता है। वो आप जिस भी गांव में से आप हेल करते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो इस नॉवल की सेटिंग ऐसी है कि वो भारत का कोई भी गांव हो सकता है और वो भारत के किसी भी गांव से अलग नहीं है। अगर आपने देखा हो तो कंथापुरा स्पेसिफिक विलेज नहीं है, जनरल विलेज है। कोई भी हरियाणा का, हिंदुस्तान का कोई भी गांव कांथापुर हो सकता है, विच इज सीरियसली इंपॉर्टेंट कि इसकी सेटिंग इंडियन विलेज है। हाँ, उसको नाम कांथापुरा दे दिया गया है, लेकिन वो कोई भी, इट इज योर विलेज। हम चाहते थे कि आपको लगे कि इंडियन राइटिंग इंग्लिश में भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में भी हो सकती है, गांव के बारे में भी हो सकती है, बिकॉज इंग्लिश इज प्राइमरली कंसीडर्ड इवन टुडे, इवन आफ्टर से 70 years of maybe more years, having 80 years when this novel came. Even today English is considered a language of urban folk. शहर की भाषा मानी जाती है, metropolitan की भाषा मानी जाती है, metropolis की भाषा मानी जाती है। But even in this novel you see that this is a village based novel. There is hardly any discussion of a city setting. So a rural folk, a student like you coming from some village must have this feeling that even your village can be described in English. English does not necessarily mean that writing in English means that characters and setting will be of city, of characters who claim to be of modernist outlook. Even traditional setting like that of Kanthapura can be very easily be the setting of an English novel. Similarly, you see characters, the narrator of the novel, the central character of the novel, the minor characters of the novel. They all characters are rural folk. Even the police wala is rural. Even the central character is rural. Even the patwari is typical patwari. See, so the setting, the characters are Indian, characters like you and me. But in one sense, it is close to you in many sense, but in one sense, it might be far. People have complained to me about this, that Murti or Amma or Gange Goda, these names are not familiar to my students. I feel very pained at this thing that they are comfortable in teaching Elizabeths and Goldwins and Thomas and John and such characters. In one sense, it might be hard. People have complained to me about this, that
Murti or Amar, Gangabura, these names are familiar to us. I feel very pained at this thing that I consider Elizabeth and Baldwin and Thomas and John and such characters. So this novel is close to you in the sense that it is Indian, but it is slightly far from you as well. We always expect South Indians to know us, but why not let us try to understand something of South India as well? We all want one India, we all are craving for having one kind of nation feeling, but how many of us wants to understand, which one of us wants to understand South India? This novel actually makes you go close to South India as well. So one feeling behind that is that you should know South India as well. So why we wanted to decide on Raja Rao, we decided on Raja Rao, but then why Kanthapura? Raja Rao has another wonderful novel. The novel is called The Serpent and the Rope. And many critics feel that Serpent and the Rope is the masterpiece written by Raja Rao. But we decided on Kanthapura specifically for Indian freedom movement. February 16, 17, when we were deciding on this book, there was a caste-based agitation going on in Haryana. I hope you all remember that because you all must have been in your 12th or first year at that point of time. And caste was resurfacing in Indian society, especially in Haryana. Caste was, again, the taboo of caste was coming up. And we as editors wanted to understand our readers, make our readers understand that even when India was fighting freedom movement, the biggest problem was caste. Kanthapura delineates it, creates it, shows it, makes it very clear to it that why we got freedom so late and why there were so many problems in Indian freedom movement, because India as a society was not behaving as one society. Even today we have problems of religion. Even today we have problems of language. Even today we have problems of caste. Even today we have the society is not behaving as one India. So we had problem England, Britain could control us. Angrez hum pe raj kar paye because we were weak. We were divided. We were divided in castes. We were divided in religion. We were divided in languages. We were divided in ऋषभ ये बता आप लैपटॉप लेके जाऊं क्या मैं अपना? So at that point of time we had this problem, and even after 70 years, 80 years, we still have this problem. I wanted specifically, we as editors wanted our readers to understand that unless we rise above the caste lines, above the religious lines, above the divisions, again we will be in the same deep shit of problem of our independence. So we wanted you to understand this. That's why Indian freedom movement, as depicted in Kanthapura, is specifically in lines of caste problem. Similarly, this is a wonderful novel about Sthal Purana. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने ध्यान दिया इस बात पे कि बार बार स्थल पुराण की वो जो लोकल डीएटी है, जो उस गांव की देवी है, हर गांव में, आप हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा ही मैंने ज्यादा देखा है, हर गांव की अपनी देवी, अपनी मढ़ी, अपना कोई स्थान है, और वहां उस लोकल देवता की, उस स्थान देवता की, स्थल देवता की पूजा की जाती है। उसकी एक कहानी है, उसका एक पुराण है। अंग्रेज को शायद ये बात नहीं समझ में आएगी, हालांकि ये नॉवल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हालांकि राजा राव को वेस्टर्नर्स ने भी बहुत पढ़ा और अप्रिशिएट भी किया है, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्थल पुराना थिंग, बिकॉज वी इंडियंस नो दिस व्हाट इट इज। हर गांव की, हर शहर की, हर छोटी से छोटी धर्म की जगह है, कोई मढ़ी बना रखी है, चाहे कोई 3 ईंट ही रख के उन्होंने मढ़ी बना दी, लेकिन स्थान देवता को पूजा जाता है। वो कांथापुरा आपको बताता है, समझाता है, डेलिनेट करता है, क्लियर करता है। सिमिलरली जो नैरेटिव है, कहानी कहने की जो परंपरा है हमारे यहाँ, तो धर्म की भी कहानियां कही जाती हैं। आप रोज सुनते हो कि करवा चौथ वाले दिन कहानी सुनी,
कि फला व्रत वाले दिन कहानी सुनी। धर्म में और कहानी में एक हिंदुत्व में, एक भारतीयता में, हिंदुस्तानियत में एक जुड़ाव है, जहां धर्म, रिलीजन, कास्ट और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये हमारी बात कहने का तरीका, हम हर चीज पे कहानी कहते हैं। तो जो नैरेटिव टेक्निक है, जो बात को, कहानियों को कहने की कला है, वो भारतीयों को स्वाभाविक तौर पे मिली है। एंड दिस नॉवल इज ए वंडरफुल स्टोरी टेलिंग, इट्स ए नैरेटिव वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज। तो उसको ये कांथापुरा डेलिनेट करता है, दैट्स व्हाई कांथापुरा इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली, फाइनली, कंडीशंस जो हैं कांथापुरा की, जिन परिस्थितियों में, एक तो आजादी का आंदोलन चल रहा है, जवान बच्चों की किस तरह की फीलिंग थी, बूढ़े लोगों के किस तरह के नजरिए थे, गांधी जी को, नेहरू जी को और आजादी के मतवालों को लेके what kind of opinions people had, all these conditions have been created beautifully in Kanthapura. That's why we want you as students to read Kanthapura. So what do you study in Kanthapura? What you have to keep in mind in Kanthapura? Now I'm coming to the conclusive slides, last 2 slides, maybe 3 slides. I'll be finishing in next 5 minutes or maybe 10 maximum. That what you should, when you read Kanthapura, when you are studying Kanthapura, what should you keep in mind? That you must get some awareness on these things. The first thing is that I have been saying again and again, that the theme of Indianness, that what kind of Indianness it projects. You have to think in terms of, if a foreigner reads this novel, what kind of country India will appear to him? Because to you it is nothing new. But you should have this kind of capability to understand that what kind of culture, what kind of society this novel projects as Indians. Similarly, there is a hell lot of discussion about being Gandhian. Gandhi is an international subject. How Gandhi wanted to use ahimsa as a way of life. Not only ahimsa as a way of winning freedom, but ahimsa as way of life. It is very easy to call names to Gandhi ji and to find faults with his philosophy, because for common man, एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा सामने कर देना गांधीज्म है। इतना सरल गांधीयनिज्म नहीं है। Gandhi is a full philosophy, and it is the philosophy of the brave, not of the coward. But you need to understand, this novel delineates it, that how Gandhi created the society, created a kind of culture, माहौल कैसे उन्होंने बनाया कि देश आजादी की तरफ एक अहिंसा के तरीके से भी जा सके. How this novel helps you understand the psyche of Indian freedom movement, that how there was an attempt to create a kind of civil disobedience against the Britishers, how using Indian things, Indian clothes, Indian food, how it is important. Even today it is important, because today we are living in a market world where everything is marketed. So if we are purchasing food and clothes from West, we are subscribing to their market. How we need to subscribe to our own market, subscribe our own hands that create things. How this novel recreates caste. How this novel reminds us of our own mistakes, the faults that we have been doing. Caste is one. Not giving females equal power is another. At your age, at a student's age, when you are in graduation, you need to understand that a nation cannot progress if some section of the society is left on its own. So Dalits, Shudras, so-called Dalits and Shudras, जो हम जिनको कहते हैं वो है नहीं. It is we who call them so. Similarly, considering ladies as weak, महिलाओं को कमजोर समझना, नहीं है वो कमजोर. हमें, अगर हम चाहते हैं कि पूरा देश तरक्की करे, तो पूरा देश तरक्की करेगा तब कर पाएंगे. अगर महिलाओं को या एक कास्ट को अगर हम छोड़ देंगे तो नहीं कर पाएंगे. This is what Kanthapura teaches you, and you must know it to understand Kanthapura. So this was today's session. What lies ahead?
What I'll be talking in next 2 sessions are issues and concerns. That would be my second session, where I'll be handling all these things in detail: the issues of caste, the issues of characters, the issues of Indianness, the issues of narrative. What are the important aspects? I'll be taking them in serious detail in one full session, maybe 75 minutes. I'll be discussing these issues and concerns. And similarly, in my last session, I'll be talking about exam related queries, that what kind of questions examiner can ask and how you should prepare yourself, because I know that most of you are interested only in exams. There is nothing wrong to be interested in exams, but there is something seriously wrong to be interested only in exams. Read Kanthapura, write down an exam on it, fine, but learn something about life as well. Learn something about Indianness as well. Be a good citizen, be a acknowledged citizen, be a learned citizen, be a citizen who understands the history of his own nation. I would be expecting your feedback after this session, after all the sessions. We will be doing some kind of problem solving. Even RKSD College will be interested in picking your problems and answering them. They have planned a couple of quizzes and they will be giving you certificates and other prizes. So I will not speak much on it. I think RKSD College and the hosts have this right to speak more on it. So thank you very much for this first session. I come to my last slide on this. Thank you very much. You can see my mail ID on this. If you feel like responding to me direct, saying something back to me direct, I welcome you. This is my mail ID, initials of my name and initials of my university's name @gmail.com. You can use this, or you can write down. So you can use this, and with this, I think that I will hand it over to Vikas, and I'll pick questions. I'll try to look at your chat and see. Can I welcome you, Vikas? Can I now expect you to take over from me and handle the audience? I think it has been around, if I'm not wrong, I needed 1 hour, 10 minutes. I've utilized my time. So I'll be expecting you to raise queries. The interactive session will be conducted by Dr. Manjula Goyal. So I hand over to Dr. Suruchi Sharma now, the anchor of the event, today's session. Hello, Suruchi ma'am. You may please invite. Please unmute yourself. Suruchi ma'am, please unmute yourself. You are not audible, Suruchi ma'am. Not audible. Yeah, there's something wrong with her voice. She's not audible. Yeah, actually. आप म्यूट हैं सुरुचि? Unmute yourself, Suruchi ma'am. Unmute yourself. Suruchi ma'am, unmute yourself. You are mute. हाँ जी sir. हाँ जी. अब please you can invite. I hope I'm audible. Yeah. Yeah. You are audible now. Thank you so much, Pankaj sir. Unmute Suruchi. Unmute yourself. Suruchi ma'am, unmute yourself. Done, sir. Okay. Suruchi ma'am, unmute yourself. You are mute. Sir, unmute कर लिया जी. Am I audible now? Loud and clear, please go ahead. जी sir, am I audible now?
Loud and clear, please go ahead. Okay. Thank you so much, Pankaj sir. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. And I'm sure that you have set the path for coming days, and students will enthusiastically look forward to the second lecture on 16th Jan. Now, the house is open for interactive session to take your queries, for which I invite Dr. Manjula Goyal to please intervene. A very good noon to all of you. Now I am take up the questions, and I am addressing to Pankaj sir. Sir, very nicely and beautifully you elaborate all the theme overall of Kanthapura, and I am taking some main points. After that, I take the questions first of the students. Dibaranjan Mandal पूछ रहे हैं, how can we talk about ideology of Kanthapurians related with post-colonial period? Sir, the question is, how can we talk about ideology of Kanthapurians related with post-colonial period? बिल्कुल सही सवाल है और I feel I am happy Devaranjan Mandal has raised this question. The very way that a novel about Kanthapura is written in English, and we have manipulated English, used our own expressions, used our own characters in English, is a post-colonial stance. Because England wanted us to read literature in English only by the English writers. They would like us to read Shakespeare and Hardy and Dickens. But the moment we manipulate it, we respond to empire. इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था सौरभ गांगुली का कि लॉर्ड्स में अंग्रेजों पे 326 रन बनाने के बाद उन पे जीतना, और ऐसे लॉर्ड्स में जहां लोग नेकटाई सूट पहन के दर्शक बैठते हैं, अगर आप लॉर्ड्स पे मैच कभी देखें तो 80% प्लस जो ऑडियंस है वो नेकटाई पहन के सूट पहन के बैठी होती है। और उस लॉर्ड्स में हमने पहले 23 जून 1983 को प्रूडेंशियल कप उठाया, वो पहला पोस्ट कॉलोनियल रिस्पॉन्स था। फिर उसी लॉर्ड्स पे सौरभ गांगुली ने अपना टी शर्ट घुमाया, वो दूसरा रिस्पॉन्स था। और यहाँ कंथापुरियन आइडियोलॉजी दैट वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन टॉक इन इंग्लिश अबाउट कैरेक्टर्स हु डू नॉट टॉक इन इंग्लिश, characters who are typically Kanthapurians, characters who are deeply ingrained in Indianness, in their soul, in their spirit, in their living, in their ideology, in their clothes, in their food habits, in their religious habits. They offer first clothes to the local deity. When their child is born, they go and offer food to local deity. All Indianness written in English, telling Britishers that we can also do it. Can you come here, write down in Hindi? So telling the world back, returning back to the empire, that's the post-colonial. They offer first clothes to the local deity. That's the post-colonial stance that this novel creates. I hope I have answered your question, Mr. Mandal. But if you have more, maybe we can handle it one-to-one. I can give you more explorative answers. Sir, another student, Sunil Kumar, is asking to you. Go ahead. Am I audible to you, sir? Yes, loud and clear. Please go ahead. Okay. We were weak, so only the caste reason behind it, no other reason. Not only caste. We were divided. I have talked even in my lecture. I talked about it, that caste is clearly visible in this novel. Feminism, not giving due respect to women and considering them as second fiddle to men, was another problem. Dividing in society into castes. So though Kanthapura doesn't present them in religion as well, but we were divided in religion as well.
So the word should not be caste, the word should be division. We had problems of divisiveness in our society. We allowed Britishers to use that divisiveness. And that's where the problem is. So caste is a serious problem, but it's not the only problem. Thank you, Sunil, for your question. वहां से YouTube म्यूट करा दीजिए आप. Okay. Yes. Please go ahead with the next one. Hanji. Sunita, Ajmer, and Mamta asking to you, what could be the any other title of the novel? That's a very good question, and I appreciate Sunita and Mamta, and I expect that these are students. What else could have been the title of the novel? There could have been many titles to this novel, and though I have not explored more what titles Rajarao thought about before giving this title, but I find this title to be appropriate. Why I find it to be so appropriate? Because it's not about one character. It's about the place. And it is local as well as global. So national as well as local. Kanthapura is one village, but it's not just one village. Every single village in India is like Kanthapura. So it is unique in the sense that it is local as well as national in its approach. There could have been other titles as well, like Towards Ram Rajya could be one title, because there are discussions about it. Sorry, Pankaj, you have gone mute. I'm done. I'm muted. So there could have been many titles, but I think rather than thinking about projections, what other titles could have been, as a student, you should target on why this title and what significance this title has, and I have elaborated on it. But anyway, I appreciate Sunita and Mamta. Thank you for the question. Sir, this is my question to you. Yeah, please go ahead. In Kanthapura, Raja Rao took mythological vision to make them understand freedom struggle to the town folk, and it was suited to Indian underprivileged town folk. Can we do that in present scenario when our students do not know about their mythology and their epics? No doubt during lockdown, they have seen Ramayana and Mahabharata on national TV channel. What do you think about that? Before I answer your question, there is a question by Jyoti Ramji. I'll be answering that as well. Rest assured, I'll be coming back to it, revisiting the freedom struggle. Let me answer Madam Manjula's question first. That's the Indian way of life. You see, in Haryana on Makar Sankranti, every father, every family will tell their children that you must take a bath right in the morning today, because Sakrat pe nahana hai, fir til khana hai. Revdi khani hai, good khana hai. Because we have stitched our life around mythology. There are scientific grounds that we wanted to teach the people, and we stitched them around mythology. It's winter season, maybe people have not taken bath for a week or something. But on Sakrat, since it is a religious compulsion that you must take a bath, so maybe for 10-15 days somebody may not have taken a bath, but on Sakrat, there will be a huge pressure on him or her to take a bath. So you try to see Indian society from that perspective. We have weaved around our life through religious, mythological scriptures and issues like that. Fasting for one day is another such thing. Navratras come twice in the year. These are the times when seasons change. Any good doctor would suggest that if you can fast for 8-9 days, maybe your system, which is now accustomed to summer, will find it easy to accustom to winters. And similarly, when winters end, summer start, you have 2 Navratras. So everything in Indian Hinduic concept, we gave it religious color,
just for people to, for a common man, for a layman, for somebody who's not very well educated, even he would follow it. So Kanthapura wonderfully recreates this society where everything has been mythologically created. हमें गांधी जी में हमें विश्वास शायद ना हो, लेकिन जब आप कहेंगे कि वो भगवान राम की तरह हमें सीता को जैसे रावण उठा ले गया था, वैसे ही अंग्रेजों ने भारत रूपी सीता को कब्जा कर लिया है, और अंग्रेजों से अब इसको छुटाने के लिए राम के रूप में गांधी जी या नेहरू जी या और बड़े लीडर्स आएंगे, तो वो उनको लोगों को समझ में आती है. तो इसलिए माइथोलॉजिकल जो नैरेटिव को माइथोलॉजिकल रूप दिया है, दैट्स ए वंडरफुल प्लॉय यूज्ड बाय राजा राव, एंड यू शुड एज ए रीडर, एज ए स्टूडेंट, यू शुड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दैट. मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब मैडम मंजुला दे दिया. ज्योतिराम जी, आई एम सॉरी इफ आई एम रीडिंग द रॉन्ग name wrongly, but somebody has written this question in perhaps in chat that Kanthapura reads. Yes, Jyotiram Gaikwad ji is writing. I think Kanthapura encourages, motivates to revisit India's struggle. Sir, can I ask other question? Just hold on. Let me answer this question first, and then we will have next question. Okay. Yes, wonderfully well. That's why I want Kanthapura. We as editors wanted this to be in syllabus, because we have started taking our independence very lightly, especially during this Kisan movement and other political issues. You will see that we have started taking Indian freedom, Indian independence for granted. हमने कैसे अंग्रेजों को भगाया था, कैसे किन हालात से निकल के हम यहाँ तक आए थे. एक नियो इंपीरियलिस्टिक स्टेट फिर से बनती जा रही है, नई कंपनियों का खेल फिर से नए तरीके से चालू है. So we must not only it promotes, I would like my reader to must revisit the kind of question that existed in Indian psyche at that point of time. Madam Suruchi, you can please ask the next question. Yes, Suman and Simran पूछ रहे हैं सर आपसे. How can we say this novel represent the whole nation? Can you come again towards the last part of the question? How can we say this novel represent the whole nation? Oh yes, I use this expression in my one of my slides, pie of life. मैंने उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बड़ा केक है, और आजकल तो बहुत बड़े बड़े केक बनने लग गए हैं. तो मान लीजिए 5 किलो का भी केक है, उसमें से आप 5 ग्राम की पाई निकाल लीजिए. पाई पूरा ऊपर से नीचे तक काट के निकाल के खा लीजिए, तो आपको पूरे केक का टेस्ट पता चल जाता है. सिमिलरली ये नॉवल एक पाई है, पूरा लाइफ तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता. जिंदगी की यही खूबसूरती है कि ये इतनी बड़ी है, इतनी डिमेंशंस में है, इतने रंगों में है, इतने विधाओं में है कि इसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता. इसके कुछ हिस्से कोई रिक्रिएट किया जा सकता है. सिमिलरली इंडिया एज ए नेशन इज ए बिग थिंग. Writers cannot, even V.S. Newell used this expression, India muddle, and hundreds of writers have tried to explain India in one book. No writer can recreate India in one book. One book? Even in 10 books you cannot recreate it. We can only create a pie of the cake. तो इसलिए इसी तरह से इस नॉवल ने सिर्फ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेटिव, एक छोटे रूप में, आकार में, जैसे आप अपना फोटो देख लेते हो, वो आप तो नहीं हो ना, लेकिन आपके चेहरे का रिप्रेजेंटेशन है. वैसे ही कांथापुरा इंडिया एज ए नेशन का रिप्रेजेंटेशन है. पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट कर. Sir, Pallavi Chauhan is asking to you, is Kanthapura also be called as the Gandhian novel of Raja Rao because he gave so much importance to the Gandhian movement? Yes, definitely, Pallavi, you are absolutely right. This is one of the most representative Gandhian novels. R.K. Narayan's Mahatma is another, I'm forgetting the exact title, but the word Mahatma comes in that title. So that R.K. Narayan's Mahatma and Raja Rao's Kanthapura are the most representative of Gandhian novels, where the actual working of Gandhian philosophy in the contemporary society can be seen.
So you are right, Pallavi. It is one of the most representative Gandhian novels. Yes. Very thank you so much, sir. I think students of BA final and all my colleagues will be very much benefited with all these satisfactory answers which were given by you. Now I invite Dr. Suruchi here on the dais. Thank you, Dr. Manjula. Friends, the end of the story is the beginning for many new stories. And as we come to the close of the inaugural day of our Workshop-cum-Lecture series, I invite Dr. Geeta Goyal to give some word nuggets and extend presidential remarks. I can hear Dr. Manjula's voice. Am I audible? Yeah, you are loud and clear. Okay. So thank you very much, Dr. Pankaj Sharma. On behalf of English Literary Society, first of all, I would like to congratulate you for expressing and sharing your knowledge with all of us on Kanthapura. Definitely, Professor Sharma, you have set the tone for the novel, and all of us, including students and teachers, they are now more enthusiastic and looking forward to reading the novel with a new perspective. Further, what I feel is Kanthapura, which was published in 1938, it is not just a novel depicting the impact of Gandhian philosophy and ideology on freedom movement. It also shows how it became a mass movement. And this thing you have also shared, that how it reached every village, every nook and corner of the country, and how people got involved with it. Because Gandhi at that time was the way of life. You have so simply and in a lucid manner elaborated the things that I think that there is no scope of any confusion on the part of students and teachers. Further, sir, you have shown that when the situation arises, even common man, he acts as a leader. And I think that this is well shown in Kanthapura, with Ratna taking up the lead. An inclusive aspect in the novel has also been highlighted by you, that we can't segregate or we can't ignore certain sections of society for the all-round development of a country. And unless we take women as we, just as has been shown here in the novel, unless we include the people of all castes, religions, our country cannot make progress. Therefore, Kanthapura is relevant in present times also. Sir, it's your humility that how you proceeded step by step. All of us are very much impressed by your valuable talk. You started why we study literature, because it relates us with life, because it makes us better human being. Yes, because we learn to empathize with people, because literature teaches us the meaning of life. Then you touched upon the aspect why study English and then why study novel. So because novel gives us certain ideas, it enlightens us, it makes us understand the nuances of life, we get better understanding of that age, and then the talk covered why Raja Rao, and then why Kanthapura. So everything has been made so interesting and clear that Kanthapura, written and published in 1938 during pre-independence era, it depicts the Indian sensibility.
And that was a remarkable step by the great writer Raja Rao. How Kanthapura depicts history, how it discusses various non-cooperation movements that were ongoing at that time in our country, but we get a glimpse of it. We get transformed in that age, and we get glimpse of life and customs of the people at that time. We become a part of it, and we come to know the intricacies of text. Next, Dr. Pankaj, you have very aptly highlighted how Ram became a way of living, the basic Indianness, and how ahimsa became a way of our life. Even today, our country is fighting with language, caste, and religion division, but all these things, if we get a peep into the novel, we will have to rise above all these things for a better India. Then, as you were mentioning, Dr. Pankaj, that Kanthapura starts with the local deity Kanchamma, and it ends with the mythological reference to Ram. Yes, it is quite important how a common man, he gets connected, and this technique has been used by Raja Rao to use these mythological figures to make the general folk, common man understand the value, the importance of that fight, the struggle. So overall, Dr. Pankaj, we are very, very grateful to you for this wonderful session, and we look forward to an equally wonderful and meaningful and engrossive session on 16th. Our interest has been generated more than double, and myself, I promise that I shall be going through the text of Kanthapura once again for the second time, which I read many years back. Our organizing committee, Dr. Vikas Bhardwaj, Dr. Suruchi Sharma, our head of the department, Dr. Parashar, and the coordinator and the co-coordinators of the Workshop-cum-Lecture series, they have been working tirelessly for last so many days. So all of us are now a part of your lecture series. And I am confident, I am sure that it would be a very, very rewarding experience for all of us. Thank you, Dr. Pankaj Sharma. Thank you very much. Thank you very much, madam. Somebody in the meantime gave me the title of that book was Waiting for Mahatma by R.K. Narayan. So thank you very much. Vikasji, please go ahead, whatever the schedule is. Thank you very much, Geeta ma'am. There's an announcement for me to make. We have planned an activity, and that activity would be posted in the groups, Telegram group, WhatsApp group of various sections, and that would comprise of a word file with 10 questions, 5 subjective questions and 5 objective questions. So I request all those institutions which are taking part, various institutions, that they can evaluate their students at their end with those activities, with those questions, and we particularly in RKSD, we would be evaluating, and it has been made a compulsory exercise for our students of BA 5th STEM. Moreover, I would like to say, stay blessed, stay healthy, stay connected, take care till we meet next on 16th Jan. Thank you so much, Pankaj sir. Thank you so much, Vikas ji. And thank you all the students nationwide who are with us today for the first inaugural session. Thank you so much. So, thank you very much, Pankaj. So, should I end the meeting now? Happy Lodi to one and all. Happy Lodi. Okay. So, ending the meeting for all.